All right, everybody. So today we are going to start O levels paper 1 coordinate geometry questions. And before proceeding to that, I am going to write all the formulas one time for all of you and all the concepts which we are going to use in this chapter. So kindly please pay attention how to draw and how to develop the brainstorming session for any particular topic. So the formula number one we had in this chapter was the gradient, and it said that y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Formula number two was for the midpoint, and midpoint is x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. Formula number three was for the distance of the line. So distance of the line was the square root. Distance of the line was square root y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square. एक दफा लिख लें मेरे साथ ही. Formula number 4 would be equation of line. Equation of line was Vadan y is equals to mx plus c. Formula number 5 we studied for the parallel lines theorem. Parallel lines have same gradient. That's the fact we studied. Remember that? And theorem number 6, formula, the fact number 6 in this chapter is that perpendicular lines gradient product is -1. जिसको हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि product of their gradient is equals to -1. Understood everybody or not? Yes or no? Any problem so far? जी बेटा. So then we studied four important lines of coordinate geometry, x-axis and y-axis. And this line was, and this was the fourth line. Vadan. So this is y is equals to x. मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? And this was y is equals to Yes, negative sir. x. So these were the facts we studied. और इन facts के साथ ही हमारा chapter जो है वो उस दिन conclude हुआ था. And only one thing is left जो कि मैंने अभी आपको नहीं समझाई. वो जो उस दिन मैंने समझाया था. If the lines are going in this direction, the gradient is positive. If the lines are going in this direction, it is negative. If the lines are going in this direction, it is 0. The gradient of this line is 0. And the gradient of vertical lines, they are unspecified or we cannot count it because it is infinite. इतना ज़्यादा होता है. That is the reason when the slope is maximum, you cannot walk on that particular. Like for example, as a person, I cannot walk on the wall. मैं wall के ऊपर नहीं चल सकता. ठीक है? So that is the reason you have to remember that if the lines they are going in this direction, so it means that the gradient is positive. If the lines are going in this direction, it means that gradient is negative. If the lines are horizontal, it means that the gradient is 0. And if there are vertical lines, so it means that we have maximum steepness. It is, for example, undefined. हम इसको नहीं define कर सकते. This was the recap of the chapter, and let's begin the show. So we have to just practice all the non-calculator questions. So let's proceed from the end, so because end will have the recent questions. So let's proceed with the question number. The question number I had here is question number 18 in the worksheet. It says that A is the point and B is the point and C is the point. We have 3 points. Find the equation of the line AB. So everybody, examiner is asking me the equation of line AB. For just for the sake of understanding, I'm going to draw a line. This is point A, for example, and this is, for example, point B. This is not to scale diagram. Point A coordinate is 0, 3 and point B is 1, 5. Ramin, if just for the sake of instance, just for the sake of example, if I sketch the line, so what will happen? We know that 0 is here and 3 would be here. So this point is A. I got this idea here. Now, for example, if this point is 1, so this is obviously 3. So, for example, this would be greater than 3, that is 5. So, 1 and 5, it will come here. Yes or no? 1 जी and सर. 5, 1 and 5, this point will come here. So, this is the sketch of this line. Now, you can see one thing that AB line, it is already traveling in a positive direction. Already traveling in the positive direction.
Vadan, if I find out the gradient with the gradient formula, you will see that the gradient will be positive or gradient हमारा positive होगा. So please everybody, please keep your mic off. अपना mic जो है वो बंद रखें. अच्छा, यहाँ पे देखें जी बेटा, find the equation of the line. So आपने हमेशा कहना है कि सर ने कहा था, सर से that the equation of the line is y equals mx plus c. Now beta, remember one thing. You need two things. One is m and one is c. So the gradient of this line would be y2 minus y1 divided by x2 minus x1. मेरे साथ साथ लिखें. अच्छा, so y2 क्या है बेटा हमारे पास? So हम यहाँ पे लिखेंगे उमर x1 y1, और यहाँ पे हम लिख देंगे x2 y2. So gradient is 5 negative y2 5 minus 3, sorry, y2 minus y1, and x2 is 1 minus and x1 is 0. So 5 minus 3 is 2 and 2 minus 1, 1 minus 0 is 1. So Vadan, can you see that my gradient is positive? So Yes. y is equals to 2x plus c. Now Vadan, with the sketch, I got to realize this thing, that the y-intercept, the value of c is positive 3 because the line is crossing the y-axis from 3. Yes or no? C is equals to 3 because line is crossing y-axis सर नहीं at समझ आई सी की. 3. बेटा y एक्सिस के बारे में हमने, c के बारे में हमने कल पढ़ा था इक्वेशन ऑफ द लाइन में, कि c कहते हैं, c इज द पॉइंट वेयर अ लाइन क्रॉसेस द y एक्सिस. c वो पॉइंट होता है जहां पे लाइन y एक्सिस को क्रॉस करे. आपको नजर आ रहा है कि दैट ए बी इज क्रॉसिंग द लाइन एट y इक्वल्स 3. डू यू एग्री विद मी ऑन दिस और नॉट? जी सर. सो ये यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल गई. तो एक फाइनल आंसर वुड बी y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3. साथ साथ लिखें बेटा, ये पार्ट नोट करें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप लोग ये नोट करें ज़रा, मैं देखूंगा कौन कौन आ गया है क्लास में. ओके, सो एवरीबडी इज इन द क्लास. सर सी की वैल्यू वो होगी जहां पर ये वाई एक्सिस टच कर रहा है ना, जिस नंबर पे. फॉर एग्जांपल अगर जहाँ पे लाइन y एक्सिस को टच कर रही है, दैट इज व्हाट फॉर द एग्जांपल वैल्यू ऑफ c इज. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर ये 3 की जगह ये लाइन 5 पे आती तो फिर हाँ सी बिल्कुल. 5 होता. अगर c की जगह ये लाइन जो है ये 5 से क्रॉस करती तो हमारे पास वैल्यू ऑफ c जो है वो 5 होती. ठीक है. ओके. और ये सर ये सी का ये जो सी की वैल्यू है ये लाइन के ऊपर ही आनी चाहिए, वाई एक्सिस के लाइन के ऊपर ही आनी चाहिए ना. बिल्कुल. और यस. इधर किधर तो, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि दैट सी इज वाई इंटरसेप्ट. सी इज व्हाट? इट्स अ वाई इंटरसेप्ट. वाई इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट वेयर अ लाइन क्रॉसेस वाई एक्सिस. अंडरस्टूड? ओके. फिर लेकिन ये ऐसे भी तो आ सकते हैं ना, हमने ग्रेडियंट निकाली और हम कोई भी पॉइंट ले ले, बेशक 0 3 ले लें या 1 5, और फिर उसको इक्वेशन में पुट करके सी आ जाएगा. बिल्कुल ऐसा है. अगर ये हम इफ वदान, अगर हम ये स्केच ड्रॉ ना करते तो हमें पता नहीं चलना था. ठीक है, कि इसकी वैल्यू ये है. तो उसका तरीका क्या है कि आप लिखते y इज इक्वल टू 2x प्लस सी. एग्री? सो पुट एनी पॉइंट, पुट ए और बी. आप ए पुट करो या बी पुट करो. मैं ए पुट करता हूँ. इफ आई पुट ए विच इज 0 3, तो x इज 0 एंड y इज 3. सो वदान 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 प्लस सी. सो 3 इज इक्वल टू सी बिकॉज 2 जीरोस आर 0. तो देखो c की वैल्यू तब भी 3 आई है. अंडरस्टूड और नॉट? ओके सर. See, this is what? This is the method. This is the method. Understood? And that y is equals to 3 with the help of the diagram. This is what? It's a sketch, which is what in math we call it as a logic. Okay. Okay. Then they say that the gradient of the line BC is given. So gradient of the line BC is given. Okay. The coordinate of B is 1 5, and the coordinate of C, La Luna, it's P and -1. Understood? So gradient is given, which is -3/4. Understood, Laluna? जी सर. So gradient formula is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So Laluna, this is my x1 y1, Arom x2 y2. Okay. So the gradient is -3/4. So I'm going to write -3/4, which is equals to y2 minus y1, means that -1 minus 5. And the x2 value is p minus 1. So let's simplify that and let's find out the value of p. So -3/4 is equals to -6. So p minus 1. So now cross multiply because it's equals to.
So minus 3 into p minus 1 is equals to minus 6 into 4. It would be minus 3p plus 3, which is equals to negative 6 fours are 24. Now I want to get the answer. So it would be, I'm going to exchange the places of 3p and 24. So 24 plus 3 is equals to positive 3p. So 3p is equals to 27. Mujgan divided by 3 on both sides. So the value of p is 9. Understood, Mujgan? So that is for 2 marks. That is for 2 marks. चलें जी जल्दी जल्दी note down करें शाबा hurry up. मैं को एक दो दो तीन तीन question you have to note down. Aleen, can you hear me? Yes, sir. That's good. Ali, can you hear me? Zedan, can you hear me बेटा? जी सर। Okay, note down करो बेटा एक एक चीज. ठीक है, आपकी बहुत छुट्टियां हो गई हैं ऑलरेडी. आई एज्यूम सबने लिख लिया. जिसने नहीं लिखा वो स्क्रीनशॉट कर ले. क्लास के बाद ऑलरेडी पास पेपर नोट्स में भेजूंगा. ठीक है, साथ साथ लिखें ताकि टाइम ज़ाया ना हो. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें. ठीक है, प्रोसीडिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन नाउ. लेट्स सी, वी हैव वन थिंग हियर. ओके, क्वेश्चन 17 थोड़ी देर बात करते हैं ताकि थोड़ा सा लेवल अप हो जाए. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 16. ओके, P is the point and Q is the point. Find the coordinates of the midpoint of PQ. Just for the sake of example, I am drawing a line P and Q, which is 1 and minus 3. And the coordinate of Q is 7, comma 2. Now the examiner is saying find the midpoint. So midpoint would definitely be here, right, everybody, or not? So we have the formula for the midpoint. And midpoint formula is x1 plus x2. लिखते जाएं, divided by 2, comma y1 plus y2 divided by 2. It is recommended to write down the formulas again and again while practicing. So Abdullah, this is x1 y1. So beta, this is definitely x2 y2. So plot the values correctly. So that would be 1 plus 7 by 2, 1 plus 7 by 2, comma, minus 3 plus 2 by 2. So my midpoint of the line would be 8 by 2, Mohit, and it would be minus 1 over 2. So 8 by 2 is 4 and comma minus 1 by 2 is negative 0.5. So I got the midpoint of the line PQ, which is 4 and negative 0.5. Understood everybody or not? And this is for 1 mark. So do write x-axis first and then write y-axis. अच्छा, y-axis पहले नहीं लिखना वरना you will get 0. आपको marks नहीं मिलेंगे. ठीक है साइम? ठीक है। Okay, second part is very easy. Piece of सर cake. ये Find the ग्रेडियंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं ना? जी, find the gradient of the line PQ. तो अब gradient हम find करेंगे तो m से represent करते हैं. So y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So the value of y2 is 2 minus y1 is already negative 3. So use bracket. Okay, x2 value is 7 minus x1 value is 1. So minus minus is plus. So 2 plus 3. 7 minus 1 is 6. 2 plus 3 is 5 and 5 by 6 is the gradient of the line PQ. Abdullah, ये बात देखें कि we got the answer 5 by 6 in a positive state. So it means that line PQ is definitely traveling in this direction. ठीक है? Because positive answer shows the direction of the line. ठीक है? Understood, Khushi? Yes, sir. Okay. Note down कर लें बेटा जल्दी जल्दी. नोट डाउन करें ताकि फिर हम आगे जा सकें. मोहित बेटा, कैन यू हियर मी? बेटा डू मेक श्योर कि आप क्लास में नोट करो. ठीक है? जी सर, अभी लिख रहा हूँ सब कुछ। हाँ जी, क्योंकि क्लास एंड होगी और मैं आपको कहूँगा कि पिक्चर्स मुझे भेजो. खिजर, आई होप यू कैन हियर मी. Yes, sir. ऑलराइट, थैंक यू. ओके बेटा, कैन आई प्रोसीड? Sir, यप.
Sir, I do not have this paper with me. Can you share it? Which paper? The paper you're working on right now. Okay, you want the worksheet in advance? Yeah. Okay, everybody, I'm sharing it in a group. Just give me a second. मैं group में ही share कर देता हूँ. सर फिर आप बाद में दोबारा भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो सारे सॉल्व भी होंगे ना. हाँ, सॉल्व भी भेज देता हूँ, ये भी भेज देता हूँ, ठीक है? ठीक. देखिए जी, मेरे पास ये जो ग्रुप ये वर्कशीट्स है ना, ये वर्कशीट्स का एक लिंक मैं आपको भिजवा देता हूँ, ठीक है? शायद मेरे कुछ स्टूडेंट्स के पास होगा भी। देखिए ग्रुप में मैंने आपको भेज दिया वर्कशीट। ये वर्कशीट्स मैं वहीं से उठाता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा ड्रॉप बॉक्स है, तो आप लोगों वो उस ड्रॉप बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट द टॉपिकल वर्कशीट फॉर एनी टॉपिक, जस्ट गो देयर एंड ओपन द वर्कशीट। इट इज़ आई हैव अटैच्ड सम मार्किंग स्कीम्स देयर एज़ वेल। तो वहाँ पे मार्किंग स्कीम्स भी आपको इसकी मिल जाएंगी, ठीक है? सर वो एमएस बुक्स में जो है वो भी वैलिड है ना. बेटा ये एमएस बुक्स बुक्स वाली चीज़ें हैं ना, एमएस बुक्स में आपके पास ये क्वेश्चन होगा, आप फाइंड आउट कर लो। जी 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 सर उसी तरह के. Okay, if you have MS books of topical, you can open it and find this question in the coordinate geometry section. ठीक है? ओके सर. It is already arranged with that order. ये yearly wise ही arranged है, ठीक है? ये तो हम लोगों ने इसलिए बनाए हैं ताकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ा सकें, वरना पीडीएफ फॉर्म्स आपको पता है कि पेपर्स की बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये हम लोगों ने कुछ बनाए हुए हैं ताकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ा सकें, क्योंकि पिक्चर्स से पढ़ाना और पीडीएफ से पढ़ाना इट्स वेरी डिफरेंट सिनारियो, ठीक है? प्रोसीडिंग विद लेट्स सी. They say that the line with equation 2x minus 5y is equals to k is passes through the point Q. But you can say one thing that, sir, you said that line is always y is equals to mx plus c, but this is not y is equals to mx plus c. Agree or not, everybody, or not? Yes or no? So यस first सर. of all, make y the subject. Make y the subject so that you understand that whether this is equation of line or not. Understood, everybody, or not? Agree? I'm doing this just for the sake of better understanding, okay? ठीक है? This is something extra for 1 mark, but I'm doing this because this is just the beginning of the topic. So then we have to realize it. So Laluna, you can see that 2x negative 5y is equals to k. Here k is the subject. I want to make 5 the boss. Y the boss. So what I'm going to do is 2x minus k and 5y will go there and it will become plus 5y. Any problem? So now divided by 5 on both sides. So 5 and 5 can be cancelled. So Laluna, y is equals to 2x negative k divided by 5. This is what my y is the subject. So now Arom, if you can hear me very clearly, I can distribute the y with both of them. So that would be 2 by 5x and that would be minus 1 over 5k. Agree or not? Yes or no? Yes. Okay, Arom, the examiner wants me to find out the value of k, and they say it to us that the line is passing through the point Q, and we have the coordinates of the point Q available in the question, which was the coordinates of the point Q is 7 2. You can see that. So the coordinate of point Q is 7 2. 7 comma 2. So I have to put 7 comma 2 in the question in order to find out the value of k. So x is 7 and y is 2. So Aline, the value of k, it is equals to 2x negative 5y. So k is equals to 2x is 7 minus 5 and y is 2. Be careful with the multiplication because sometimes you are in a hurry and you just write the answer and you do not think that whether it is correct or not. Sometimes easy multiplications are wrong. Sometimes students they multiply 2 with 7 and they know that the answer is 14, but intentionally they write 9 because they add them. Okay? So please be careful. So 2 sevens are 14 minus 10. So beta 14 minus 10 is how much? 4. 4 is the requirement of the question. So जो मैंने y को subject बनाया ये सिर्फ extra किया है just for the sake of better understanding. ठीक है? Because Ramin, you can see one thing that in a question like this, examiner can ask you that what is the gradient. So gradient of the line is 2 by 5, which is the value of m attached with x. Understood, Vadan? समझ आइए बेटा? यस सर. Gradient is always attached with x. Understood, Arom? Understood, Arom? सर ये जरा ये साइड पे एक पॉइंट पे लिखते हैं ग्रेडियंट इज ऑलवेज अटैच्ड विद एक्स. तो ये मैं लिख भी देता हूँ और आपको नजर भी आ रहा है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c में
Gradient is attached. Agree? जी sir. Gradient is attached with x. ठीक है जी? x के साथ attached होता है. ठीक है? Thank you sir, thank you. Okay. Now they say that the line x plus ay is equals to 3 is parallel to line L. अब आप फिर कहो कि sir this is not the line, ये line है ही नहीं. आपने कहा line is y is equals to mx plus c. So let's arrange it. So x plus ay, it is equals to 3. So ay is equals to minus x plus 3 divided by a on both sides. So a यहाँ पे भी आ जाएगा और a यहाँ पे भी आ जाएगा. So y is equals to minus x by a plus 3 by a. Okay. Now beta, remember one thing. They are saying that the line is parallel to line L. Okay. Now beta, I told you when the lines are parallel, they will have the same gradient. So gradient of line L, Vadan, gradient of line L is 2 by 5. It is what? 2 by 5. So the gradient of this line would be what? 2 by 2 5, because the lines are parallel to each other. Now we have the subject, everybody. So now I told you that the gradient is attached with what? The gradient is attached with the variable x. So can you see, everybody, that here x is the variable attached with x is minus 1 by a. Agree or not? Yes or no? Yes. So minus 1 over a, it is equals to 2 over 5. Let's find out a by crossfire. So let's cross multiply. So I'm writing here cross multiply. मैं हर चीज लिख रहा हूँ ताकि कल को कोई गिला ना करो. So 5 multiply with minus 1 is minus 5, and that would be 2a. So divided by 2 on both sides. So 2 cancel. So the value of a is minus 5 by 2, which is negative 2.5. So Arom, I hope you understood this thing. Yes or no? Yes. Arom, do you have the non-calculator booklet with you right now? Yes, sir. Can you please check in the MS book that do you have these questions there? Yes, sir. Okay, so can you tell me the page number? Laluna, you must also have this booklet. Yes, sir. तो आपने Page 356. okay, those having MS books, so it is page number 356. Okay, No, sir, it's your book. uh, which book? Okay, the topical one of paper 4. No, paper 2. Paper Yeah, 1, paper your 2. book. Yeah. Yeah. It's the same book, MS. I haven't made the non-calculator yet, so that is the reason I have just pasted a title of mine on MS. Just in order to give you the clarity, okay, that I am using as a teacher this booklet for the non-calculator reference. Okay. So those having MS books, you can review to the page 356. Thanks to Arum. Okay. So can I proceed, Vadan? अगर आपके पास भी MS है तो आप ओपन करके देख लो, नॉन कैलकुलेटर में आपको ये क्वेश्चन Yes. मिल जाएगा. Yes sir, yes. मिल गया? Yes sir है. ओके, लिख लिया सबने तो कैन आई प्रोसीड? Yes sir. खुशी, कैन आई प्रोसीड? Yes, sir. ऑलराइट, प्रोसीडिंग. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Question number 15 again. P is minus 4 and 4 and Q is 3 minus 2. M is the midpoint of PQ. Okay, so let's develop the strategy. According to the examiner, they say that this is a line. M is the midpoint of PQ. Okay, so it means that M is here. Okay, and P is the minus 4 and positive 4. And the value of Q is 3 negative 2. Ramin, can you see that how I'm solving the question so neatly and tidily? Huh? Ji, sir. So you should all
understand that how to write the question for the examiner. So let's begin. M is the midpoint of PQ. Find the coordinates of M. Examiner is just complicating things here in order to give you not the clear idea that what you're supposed to do. So that was the same question. Similar, find the coordinates of M, mean find the coordinate of the midpoint. So midpoint, we have the formula. I am writing the formula again and again. Midpoint of M, it would be x1 plus x2 divided by 2, comma, y1 plus y2 divided by 2. Omar, can you hear me? X1 and x2. So this is x1, y1, x2, y2. So divided by 2 divided by 2. X1 is minus 4 plus x2 is 3. Y1 is plus 4 plus y2 is minus 2. So bracket use करें. Minus 1 over 2, comma 4 minus 2 is 2. बिकॉज मुहित प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो आपको चाहिए कि आप यहाँ पे एक स्टेप कर लेना। खैर है, कोई बात नहीं, आप लिख सर देना 4 माइनस 2/2। सो जी बेटा सुन रहा हूँ। सर मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू नहीं होगा? तो मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू ही निकाल रहा हूँ ना बेटा, मैंने कुछ और निकाला है क्या? सर मिड पॉइंट ऑफ एम तो नहीं होगा ना? जी सर आपने अच्छा, तो मिड हाँ पॉइंट ठीक है ऑफ ठीक है एम। ठीक है ठीक है, मैंने खाली ये लेटर गलत लिखा है यहाँ पे, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। थैंक यू। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ठीक है जी। सो माइनस 1 over 2, कॉमा 2/2। सो बेटा माइनस 1 over 2 is बताओ negative 0.5, comma 2/2 is 1. So Laluna, the midpoint answer is negative 0.5 and positive 1. Understood everybody or not? It was previously for 1 mark, but now you will get these questions for two marks at least. Okay? चलें लिखते जाएं, तो साथ साथ ही दूसरा क्वेश्चन पढ़ते जाएं। मैं भी एक बच्चे से क्वेश्चन पूछता हूँ। बेटा, find the gradient of the line PQ. So can anyone tell me that what is the formula for the gradient? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, do tell the left side, which is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So gradient is y2 minus y1. So we have mentioned each of everything already, Sime. So y2 is minus 2 minus y1 is positive 4. x2 is 3, minus is of the formula, and x1 is negative 4. Agree? So it would be negative 6. 3 minus minus plus. So 3 plus 4. No need. आप एक step खैर extra करो, कोई बात नहीं. So minus 6/7 is the gradient of the line PQ. So Vadan, what you can see after watching this gradient, that it is negative. आपको क्या लगता है इस नेगेटिव ग्रेडियंट से? सर ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है ना? यस, ये लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव। एग्री? माइनस शोज दिस। अग्री? अग्री? Yes, sir. Negative gradient means that the line is traveling in this direction. Understood? Moeed? Yes, sir. Understood, sir. All right. Moeed, can you hear me? यस सर। जी, समझ आ रही है कि नहीं? सर थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन फोकस कर रहा हूँ। नहीं, बताएं क्या कंफ्यूजिंग है, मुझे बताएं, मैं क्लियर करता हूँ। इतनी देर बाकी लिख रहे हैं। सर बहुत टाइम बाद मतलब ये ग्रेडियंट और ये सब कर रहा हूँ ना, तो मतलब नहीं, फ्राइडे वाले दिन आपने लेसन पढ़ा था? फ्राइडे वाले दिन। जी, हमने फ्राइडे का दिन पढ़ा था, हमने नोट्स भेजे थे आपको, फिर आपने कॉपी में लिखा था। फ्राइडे के दिन हमने शायद ये किया था, मुझे तो याद नहीं है सर। बिल्कुल यही किया था। अच्छा से आप ग्रुप खोलो और आपको देखो यहाँ पे नोट्स मिलेंगे। आप पहले नोट्स लिखना, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस लिखना, ठीक है? ओके कल ओके। स्कूल में आपकी कॉपी चेक करूंगा। चलें, अच्छा सही है, सही लेट्स है सी। सर। अब्दुल्ला बेटा, कैन यू हियर मी? जी सर। अच्छा, look at part C everybody. They say that Q is the midpoint of the line PQR. So Q is the midpoint of the line PQR. So everybody, please pay attention.
There is a line PQR, P, Q, and R, where Q is the midpoint. So we have the coordinates of P, which is negative 4, 4. We have the coordinates of Q, which is 3, minus 2. We do not have the coordinates of R, so which is definitely my x2, y2. Now we will be using the midpoint formula in order to investigate that what is my x2. So beta, we know this already. Arom, that minus 4 plus x2 will give me this 3. Yes or no? Yes, sir. So minus 4 plus x2 will give me, divided by 2 will give me plus 3. Understood, everybody? Yes, sir. So minus 4 plus x2 is equals to 2 3s are 6. Minus 4 will go there. So x2 is equals to 6 plus 4. So x2 is equals to 10. Vadan, x2 की वैल्यू आ गई है. Any problem? सर 2 डिवाइड कर दे 10। मैंने 2 मल्टीप्लाई किया ना बेटा, ये क्या हो गया ओ, यहाँ पे 2? अच्छा ये वो वाला x2 है, ठीक है मैं हाँ जी, समझा। तो हाँ आप समझे, ये x2 लिखा है, ये x मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं लिखा गुगु. ठीक है। Okay. Now see Vadan, that this minus 4 plus y2 divided by 2 will give me minus 2. Agree? यस So let's proceed that. So हम लिखेंगे 4 plus x2 divided by 2 will give me negative 2. थोड़ी थोड़ी y2 जगह, सर y2 एक मिनट ज़रा, थोड़ी जगह मुझे कम पड़ रही है, मैं वो सोच रहा था. मैं थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा साइड पे करता हूँ. डायग्राम बहुत ज़्यादा हमारे करीब आ गया. ओके, डायग्राम मैंने बहुत बड़ी बना ली थी इसलिए. ओके, सो बेटा 4 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव 2. साइन 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 प्लस y2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव 4. तो 4 वहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4. एग्री? सो y2 would be equals to minus 4 minus 4. So y2 is negative 8. I got the answer for negative 8. मुस्कान, can you hear me बेटा? आवाज आ रही है? So my coordinates are x2 is 10. This is the coordinate of r, and my y2 is negative 8. अगर आप इसको use करो, so you will get q as the midpoint, and that will be the confirmation that you have attempted the right answer. Write down the value of pm divided by mr, where pm is the distance and mr is also the distance. Okay everybody, or not? सर where is it written that pm is the distance and mr is the distance? Beta, can you see that one thing, that they say that this is pm? Can you see that without any बिल्कुल symbol? ठीक है। So pm means length. Pm means what? लेंथ Pm means length, and mr is also the length, which is technically the part of vectors, but still we will do it. Okay, हम अभी करेंगे इसको, ठीक है? Because we have everything, हमारे पास सब सर कुछ मौजूद है. जी बेटा, पर्ची पे कर सकते हैं, क्या चीज? पर्ची पे कर सकते हैं सर। बेटा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये वर्किंग साइड पे पड़ी है. मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको दोबारा. Let me erase this everybody, and Simon, please pay attention. But they are saying that Q is the midpoint of the line PQR. It means that sine PQR is a line. Any problem, anyone? So this is P, this is Q, and this is R. Understood, Simon? The coordinate of P was minus 4 plus 4. The coordinate of Q was 3 negative 2. Agree? The coordinate of R was missing, which was x2 y2. Agree? That is what we have in the first one को हम x1 y1 लेते हैं, second last one को x2 y2 लेते हैं. Agree? So Simon, we know this already, that minus 4 plus x2 divided by 2 will give us 3. Agree or not? Midpoint के formula में ये होता है ना, x1 plus x2 divided by 2. Agree? जी अच्छा तो ठीक है साइन ठीक है। minus 4
plus x2 whole divided by 2 will give me 3. तो ये मैंने लिखा है x1 plus x2 divided by 2 will give me 3. I found x2. Understood? बिल्कुल And then same I used that 4 plus y2 divided by 2 will give me -2. Understood? जी सर Okay, write down the value of PM and MR. चलो मैं ये लेटर करवा दूंगा, थोड़ी देर बाद करवा दूंगा, ठीक है? आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी आप लोग ज़रा नए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन अगर चाहते हो तो मैं करवाऊँ, अभी करवाऊँ? नहीं सर 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 स्लो स्लो इस कर क्वेश्चन में तो सारे वैल्यूज गिवन है, तो ये तो इजी होगा। इजी तो बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा ना आपके लिए, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है और डिस्टेंस फार्मूले से कराऊंगा, क्योंकि वेक्टर्स अभी करवाऊँ तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। वेक्टर्स अभी जी आपने सर पढ़ा नहीं है ना। फिर छोड़ दे सर, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। चलें, अभी ऐसा करते हैं, एम को प्लॉट भी कर देते हैं। एम की वैल्यू थी हमारे पास -0.5 एंड 1। एग्री? तो वदान, आपको याद है कि ये एम को कोऑर्डिनेट पी और क्यू का मिड पॉइंट था, याद है? जी सर। तो ये यहाँ पर आएगा और एम कोऑर्डिनेट वाज -0.5 और 1, ठीक है? ठीक है। Okay, those who were done, like for example, Ramin and Khushi and Arom and Laluna, please pay attention. सिर्फ आप चारों सुने जरा थोड़ा यहाँ पे। बेटा P to M is a vector. So you can see one thing, Arom, that P is -4, X is -4 and M is -0.5. Agree or not? Yes, sir. So you have to travel to -0.5. Agree? So Yes. -4 comes first, and then we have -0.5 closer to the 0. Agree? So you will Yes. take 1, 2, 3, 3.5 jumps. Agree or not? So Yes, it sir. is technically 3.5 left. Agree? Yes. And at 4, you are at 4 here, and this is -2. It means that 6 down. Agree? So you will Yes, sir. write PM vector, and then you will find out the magnitude of PM. Understood? Then same case for the MR. Okay? Find the magnitude of that vector as well, and then divide them. Okay, so you will see that it will be complete squares, and you will get the answers. Okay, understood, Aaron, do you understand this? Yes, sir. Because M to RC -0.5 and R coordinate is 10, so -0.5 and this is +10, so it is approximately 10.5 jumps towards right. Understood? Yes, And sir. it's 1 and it is -8. From 1 till -8, you know this already, this is -9 jumps. Agree? Yes, sir. So it is -9. So you got two vectors, you will take the magnitude of them and then you will just divide them, and that would be the value of PM divided by MR. Agree? Agree? Agree or not? Yes, sir. All right, चलें जी, ये इनके लिए था, बाकी आप लोग अभी बिगिनियर हैं तो इंशाल्लाह फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, they are saying something here. The grid is available to me, and the examiner is saying that on the grid, draw the above graph of x plus y equals 6, which is technically my question number 14 here. So on the grid, draw the graph of x plus y is equals to 6. So you can say one thing, everybody, that sir, this is not the line. So let's do it. So y is equals to -x plus 6. Now this is the line. Agree, Saim? To draw a line, बिल्कुल सर to draw a line, we need 2 points. So I will just make a table here, x and y. Vadan, I am putting x as 0. I got y as 6. Any problem? Because -0 plus 6 is +6. Agree? Agree? Now put x is equals to, for example, 2. आप x की जगह पे 2 डाल दें तो -2 plus 6 would be +4. Agree or not? Yes or no? So I got my 2 points, because in order to draw a line, we need only 2 points to draw a line. Agree? So which would be 0, 6. So 0, 6. So 0, 6 is my that point. This is 0 and this is 6. So Laluna, this is 0, 6. Okay. And 2, 4. X is 2 and y is 4. This is also 2 marks. Understood or not? Yes Yes, or sir. no? Yes, sir. Now
in order to draw a line, all we need is 2 points. Agree? So just use the ruler. ठीक है, connect the 2 dots you आपने जो draw किए हैं या जो plot किए हैं यहाँ पे, so आपने इन दोनों points को join करना है. So Ramin, can you hear me? जी सर। So this is my line. And the name of this line here, Vadan, the name of this line is x plus y equals 6. Understood? Then the examiner is saying, draw the graph of 2y plus x is equals to 4. You can say me, sir, this is not line. ये line है ही नहीं. Y को subject बनाएं. तो हम y को subject बनाएंगे पहले. So 2y is equals to minus x plus 4. Luna divided by 2 on both sides. So 2 to cancel. So y is equals to minus x by 2 plus 4 by 2, which is 2. Agree? So La Luna, again I need a table. Agree? This is x and this is y. Okay, अब the shortcut. Shortcut. वदान, आवाज आ रही है मेरी? हारून? जी सर, जी जी। ओके, तो बेटा मैं जब x को 0 पुट करूंगा तो बेटा 0 डिवाइड बाय 2 0 ही होता है, और 0 प्लस 2 आपके पास फिर प्लस 2 आएगा, तो 0 2 आ रहा है. एग्री और नॉट? एग्री और नॉट? अच्छा सर। अब वदान आप देखो यहाँ पे लिखा है ना माइनस एक्स बाई 2. जी। अब माइनस एक्स बाई 2 हम इसमें इवन नंबर पुट करते हैं. सो लेट्स टेक 2. तो हम प्लस 2 ले लेते हैं, x की जगह पे 2 पुट करो. सो माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज माइनस 1 एंड माइनस 1 प्लस 2 इज प्लस 1. सो हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट प्लस 1 आएगा. ठीक है? सो यहाँ पे 0 2. सो वदान दिस इज 0 2. कैन यू सी दैट? And x is 2 and y is 1. X is 2 and y is 1. X is 2 and y is 1. So this is my second point. Understood everybody or not? Yes or no? सर ये Yes, तो sir. ये टेबल वाला तो बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरा है। दोबारा सुन लें जी. पहले वाला समझ पड़ा है? पहले वाला नहीं ना सर, पहले वाला भी बिल्कुल। देख लें जी. दोबारा देख लें जी एक दफा. पहली दफा पढ़ रहे हो तो इधर सुन लें सब. बेटा वदान एंड एवरीबॉडी, इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ लाइन वी नीड 2 पॉइंट्स. अंडरस्टूड? हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत है. ठीक है? जी अच्छा, सर। 2 पॉइंट्स की जरूरत है. तो दिस इज माय x एंड दैट इज माय y. I have this equation. Initially, this was the equation, but I made few changes that this is my equation with y subject. Any problem, anyone? नो सर। Okay. So please pay attention. अच्छा, अभी कोई भी बच्चा mic on ना करे. ठीक है? Okay. So now the first step, put any coordinates, any coordinate of x to get y. To get y. This is first step. I drew the table in front of you. You can see that. So I have the equation which is y is equals to negative x plus 6. Vadan, in order to draw the line, we need at least 2 points ताकि हम ruler रख सकें. Understood? बिल्कुल सर। So put x is equals to 0. हमने x को 0 put किया तो मैंने यहाँ पे टेबल पे 0 लिख दिया है. Understood? So जो y is equals to minus 0 plus 6, तो क्या y की वैल्यू 6 आ रही है? -0 + 6। तो प्लस 6 आएगा ना. जी सर। तो यहाँ पे आ गया 0 6. तो आपने देखा मैंने यहाँ पे 0 6 को प्लॉट किया हुआ है. बिल्कुल सर। ठीक है? the same way you are going to put y is equals to anything. ठीक है? मैंने x is equals to 2 लिया था. ठीक है? ठीक है। x की जगह पे 2 पुट करो इस इक्वेशन में, तो ये आएगा y is equals to -2 + 6. तो ये आ रहा है बेटा y is equals to +4. तो जब मैंने x को 2 पुट किया, y was +4. एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। सो देखें बेटा, मैंने 2 और 4 को यहाँ पे पुट किया और रूलर से लाइन लगा दी थी. अंडरस्टूड? ठीक है। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ दूसरी लाइन के लिए, तो काइंडली प्लीज पे अटेंशन. ठीक है? आप गौर कीजिएगा. ठीक है? मैं ये पॉइंट मिटा देता हूँ ताकि जरा बिल्कुल बेसिक से समझ आ जाए. ऑन द ग्रिड अबव ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लाइन. Arom, make y the subject. It will ease your calculations. Okay? So I try to. So 2y is equals to minus x plus 4. Understood? Yes, Understood sir. everybody? So now divided by 2 on both sides. So divide by 2 on both sides. So 2 and 2 cancelled. Agree?
So Vadan, can you see that my equation of line is minus x by 2 plus 4 by 2? Any problem? No, sir. Now I need the table again because in order to draw the line, I need 2 points. Ramin, understood? Khushi? जी sir. Beta, if I put x is equals to 0, what will happen? You can see one thing. Khushi, this is the rough working, okay? Let me write here working 1. So this is my working number 1. So my equation is y is equals to minus x divided by 2 plus 4 by 2, which is 2. Beta 4 by 2 क्या आता है? 2 आता है. Agree or not? So I'm putting x is equals to 0. Put x is equals to 0. So Laluna, y is equals to minus 0 by 2 plus 2. 0 by 2 is 0. So 0 plus 2. So the y is 2. Any problem? No, sir. So 0, No, 2. So beta this is 0, 2. Okay. Now Ali, I have 0, 2 already. I need one more point so that I can put the ruler on the graph. Okay? So I need one more point. As you can see that the formula x is divided by 2. So that is the reason let's take an even number of your choice. Even number कोई भी ले ले, मैं 4 ले लेता हूँ इस दफा. तो मैंने 4 ले लिया. ठीक है? So let me put value of 4. मैं यहाँ पे 4 की value put करूँगा. तो y is equals to minus x divided by 2 plus 2. Now y is equals to minus 4 by 2 plus 2. बेटा y is equals to minus 2 plus 2. तो बेटा y की वैल्यू क्या आ रही है बतान? 0 आ रही है. क्या आ रही है बेटा? 0. So x is 4 and y is 0 is this point. Agree or not? Yes or no? Yes, sir. In order yes, to draw sir. the line, just put your ruler here and just join the two dots. आपने दोनों dots को join करना है. Agree? अब मैंने I tried to draw the line, the first line with the red color. So I am drawing the second line with blue color. मैं blue color से line draw कर रहा हूँ. Can you see that? देख रहे हैं सब? आपकी line जो है लालूना, your line should be according to the grid. ठीक है? According to the size of the grid. Understood? It should not go outside. Okay? So Ramin, everybody please pay attention. The next part is of the inequalities, and we have studied the inequalities already in topic number 1. So let's proceed that. और अब हम कर सकेंगे इसको. On the grid above, shade and label the region are defined by the three inequalities. First inequality. This is my first inequality. They say that x plus y is less than or equals to 6. X less than or equals to 6. Beta, x plus y equals to 6 is this red line. Agree or not? Agree or not? Vadan? Yes, sir. So the upper region of the line is crossed. Agree or not? Yes or no? Sir, why it is crossed? Because it is written that x plus y is less than or equals to 6. Understood? Mm-hmm. So the upper region is greater than 6. Understood? Yes, sir. Okay. Then they are saying that 2y plus x is greater than or equals to 4, and 2y plus x is the blue line. The greater region is above the line, so the lower region than low anything which is lower than blue line is cancelled. So this region is crossed. Agree or not? Yes or no? जी Yes सर, Yes, तो or ये no? समझ आ रही है सर बेटा? फिर ये कुछ भी जो भी होगा वो ये रेड और ब्लू के बीच में होगा. अभी देखेंगे ना. हाँ, इनके दरमियान में होगा. अब वो कहते हैं y is greater than 2. y is Greater than 2. बेटा y is greater greater than than y is greater than 2 is this green line. Can you see that? हाँ जी. Yes. Can you see that? That y is Yes. greater than 2 is this green line. This line is y is equals to 2. So greater than 2 means the region above this green line. So the lower region is also crossed. Any problem? No, sir. Okay, last one will decide everything. X is greater than or equals to -1. So beta x is greater than or equals to -1 is the line with the black color. So this is the line x is greater than or equals to -1. So it means that anything before that is also crossed. So we are left with the region, and we can say that this region is the area which is the required region. They say that shade and label region R. So I am going to label this region R over here. Arom, is this clear? Yes, Sure. yes, sir.
So this is x equals -1. So that was the question. बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो आप लोगों को सीख जाएंगे। तो मैं ब्लैंक वर्कशीट भी भेजूंगा और दूसरी वर्कशीट भी भेजूंगा आपको, ठीक है। तो 1 by 1 करते हैं इनइक्वालिटीज। ट्राई टू डू द इनइक्वालिटीज 1 by 1। ओके, सो प्रोसीडिंग। अच्छा जी जी। आई जी जी, कौन बोल रहा था बेटा? उमर? Umar beta, can you hear me? The line 2y is equals to 6 minus 3x meets the y-axis at A and x-axis at B. Now, Vadan, this is not equation of line. Agree or not? So divide by 2 will work. So 2y is equals to minus 3x plus 6. Arrange it. Now divide by 2 on both sides. So 2 cancel. So y is equals Sir, to no, sir. negative. Yes, beta. Oh, 2y equal. What? Oh, 2y equals to 6 minus 3x. Yeah, I just arranged it. Minus 3x plus Oh, 6. oh, oh. Sorry, sir. Sorry. So divided by 2, so it would be 6 by 2 is 3. So I have got this equation here. This is my equation of line. Now they are saying that the line meets the y-axis at A. So at A, I can say that the line is touching y-axis. So x would definitely be 0. Agree or not? Yes or no? And it meets the x-axis at B. So La Luna, I can also say that at B, y-axis would be 0 because the line is crossing x-axis. When a line crosses x-axis, y coordinate is 0. When a line crosses y-axis, x coordinate is 0. Can I, Aline, do you understand this thing? Yes, sir. So find coordinates of A. First of all, coordinates of A. So Vadan, जी सर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फाइंड आउट करने हैं तो लाइन क्रॉस कर रही है वाई एक्सिस को, सो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड वदान? वदान, कैन यू हियर मी? यस सर। अच्छा, गौर करें, द लाइन इज क्रॉसिंग y axis at a. It means that at a x coordinate would be 0. So let's put x is equals to 0. So y is equals to minus 3 over 2. X is 0 plus 3. Anything multiplied by 0 is 0. So y is equals to plus 3. So Arom, the value of a coordinate of a would be 0 and 3. Any problem? No, sir. All right. So then we have coordinates of B. Coordinates of B. Now at B we got the idea that y is equals to 0. So y is equals to 0 because the graph is that because the line is crossing y axis. So साइन जब कोई भी लाइन y axis को क्रॉस करती है तो x 0 होता है, और जब x axis को क्रॉस करती है तो y 0 होता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, इट मीन्स दैट मैं आपके सामने स्केच भी करता हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। तो put y is equals to 0 because the line is crossing x-axis. So equation of line is sine minus 3 by 2x plus 3. So y is equals to 0, which is equals to minus 3 over 2x plus 3. वदान minus 3 by 2 लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा plus 3 by 2x. Agree or not? Agree? सर क्या? Minus 3 by 2 when goes to the left side it become positive. Agree? बिल्कुल सर। 2 यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x is equals to 6 means x is equals to 6 by 3, so x is equals to 2. X is equals to what? 2. 2 X is equals to what? 2 So we got the coordinates of the point of intersection of the line A with x-axis and the y-axis. Understood? यस सर। Understood? So याद रखें, एक टिडबिट लिख देता हूँ अपने पास, नोट कर लें। टू फाइंड आप लोग लिखते जाएं, टू फाइंड द x intercept means the point where the line crosses x-axis, put y equals 0 around, and to find the y-intercept, put x equals 0.
Understood, Laluna? Yes, sir. And Laluna, they are saying that find out the gradient of this line. So it's piece of cake now because it is already in subject making. Aisha. So y is equals to mx plus c. Whatever is attached with mx, that is the gradient. So what is the gradient, beta? Can someone tell me? It is already minus shaded. 3/2 Yes, minus 3 by minus 2 3 is by minus 3 by 2 is the gradient for 1 mark. बहुत आसान सवाल था. Yes or no? यस सर आहा, मजा आया भाई. यस सर सर ये कोऑर्डिनेट बस खत्म हो गया ज्योमेट्री बेटा खत्म नहीं हो गया, इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आफ्टर दैट वी हैव द चैप्टर ऑफ क्या नाम है ग्राफ्स. ठीक है सर ये ग्राफ्स नहीं है बेटा, ये ग्राफ्स हैं. अभी ग्राफ ऑफ फंक्शन अभी आगे आएंगे. ठीक है, तो ग्राफ ऑफ फंक्शन के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बहुत ग्रिप लेना है. ठीक है, so I request all of you, whatever questions we have practiced today, kindly please, this is my advice, just note down all these questions, or you can practice these questions one more time at home. ठीक है, whatever we have practiced today, you guys are supposed to practice all those questions again. And if you have the booklet, so then please open the booklet and attempt few questions. Try to attempt the same questions we practiced today in the class. ठीक है, whatever you do not understand, leave it for me, and then you can just send me a picture so that I can easily look into it. Understood everybody or not? Yes, sir. ओके सर Okay, so we will start tomorrow inshallah from part B because ऐसे it's all. जी तो मुझे एक चीज नहीं समझ आई, आप मुझे समझा देंगे? बोले ना. फिर वो जब हम एक पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, स्टार्ट में था जब हम ए की वैल्यू फाइंड कर रहे थे. ठीक है, मैं भी चला जाता हूँ नीचे. एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे या यहाँ पे. यहाँ से मुझे यहाँ से ही समझ आई, जहाँ आपने लिखा -1/a इज इक्वल टू 2/5, मुझे यहाँ से ही समझ आई थी, मुझे मेरा बेटा दोबारा यहाँ पे समझ डालें कि यहाँ पे बस अभी समझ आ जाएगी, जरा गौर करना. अच्छा, आपको पता है ना कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है. हाँ तो ये जो एरिया है ये ग्रेडियंट होता है कि नहीं? होता है. ये उसने वदान ने कहा था ना कि सर लिख दे, मैंने लिख दिया था ग्रेडियंट इज अटैच विद एक्स, लिखा था कि हाँ हाँ नहीं? हाँ हाँ, ये एग्री? तो ग्रेडियंट. ये जी वदान ने बोला था और हमने लिख दिया था इधर. तो देखें m इज इक्वल टू -1/a. एग्री और नॉट? नहीं बेटा नहीं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ ना. c इज इक्वल टू 3/a, x इज इक्वल टू x, so m इज इक्वल टू -1/a. एग्री और नॉट? अच्छा अच्छा, मुझे समझ आ गई, ठीक है, थैंक हाँ यू. जी, तो m की जगह पर मैंने सिर्फ यहाँ पे 2/5 लिख दिया क्योंकि ग्रेडियंट अवेलेबल था. हाँ मुझे समझ आ गई. चलें, गुड लक. सर चलें जी, थैंक यू सो मच. अल्लाह या हाफ़िज़. जी आलिन. इसी इसी सवाल का ये पूछना है कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल है और पैरेलल का ग्रेडियंट सेम होता है तो हम अज्यूम क्यों नहीं कर सकते कि a इज इक्वल्स टू 5 होगा, दोनों डिनोमिनेटर्स अरे उनका नहीं दूर नहीं नहीं नहीं, मेरा पुत्र मेरी बात सुने, अज्यूम नहीं करना. ठीक है, हम्म, अज्यूम नहीं करना. आप मैथ्स में एजम्पशंस पे नहीं चलते, मैथ्स में आप सोल्यूशंस पे जा बात करते हैं. ठीक है, जी मैथ्स में सोल्यूशन पे बात करते हैं, आप एजम्पशन पे नहीं जाएंगे. दूसरी बात ये कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो ए था वो तो वाई के साथ लगा था. एग्री? जी जी और सब्जेक्ट मेकिंग के बाद ए जो है वो एक्स के साथ डिवाइड हो रहा था. जी और हमारे पास ग्रेडियंट गिवन था और ग्रेडियंट इज ऑलवेज अटैच्ड विद एक्स if y is the subject. Understood? जी सर. So please be careful before assuming something. ठीक है, Arom, you जी stay in the class and everybody can leave the room. Thank you so much everybody. Thank you so much. अल्लाह हाफ़िज़ सर. Allah Hafiz. Allah Hafiz.